ईगो का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ईगो डजंट सेटिस्फाई यू दैट मच। अपने को लगता है कि ईगो इज लाइक आवर वेरी आइडेंटिटी एंड द बीइंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईगो क्या करता है कि अंदर से ना तुमको छोटा बताने की कोशिश करता, तुमको इनसिक्योर बताने की कोशिश करता, तुमको वर्थलेस बताने की कोशिश करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हो, पर वो बताने की कोशिश जरूर करेगा कि दैट इज योर आइडेंटिटी करके। पर इसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक बहुत खतरनाक फेल सेफ मैकेनिज्म यूज करते हैं। फेल सेफ मैकेनिज्म इस तरीके से रहता है कि जब हम किसी को कोई चीज़ करते हुए देखेंगे कि अरे यार वो बंदा देख कितना अच्छा मतलब काम कर सकता, कितना अच्छा स्टेज पे स्पीक कर सकता, सिंग कर सकता, डांस कर सकता, हम उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट करने की जगह पे ना हम ये सोचते कि वो ये सब कर सकता करके मैं ना उससे जेलस हूँ। एक तरीके से माइंड अपने आप को एक चीज बोलेगा कि अरे यार काश मैं भी ये कर सकता, काश मेरे पास भी ये सारी क्वालिटीज रहती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी क्वालिटीज तुम में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये सारी क्वालिटीज तुम में एग्जिस्ट करती है। तुम्हारी खुद की इनसिक्योरिटी वो क्वालिटी को, तुम्हारी खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, तुम्हारा खुद का एक तरीके से सबकॉन्शियस वो क्वालिटीज को तुम्हारे आगे आने नहीं दे रहा। इसका मतलब ये सारी क्वालिटीज तुम में एग्जिस्ट करती है। वो गेम के लेवल के जैसा होता है कि अगर तुम ये लेवल तक पहुंच नहीं सकते तो ये स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक पर्क है, कोई स्पेसिफिक पावर है, कोई स्पेसिफिक तलवार है जो तुमको मिल नहीं सकती। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं करता कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये करता कि वो तुम्हारे ग्रैस्प में है। ठीक है। लेकिन तुम वो तलवार के लेवल के सामने खड़े होके ये सोच रहे हो कि काश ये मेरे पास होती। ठीक है। इसका मतलब वो तुम्हारे पास है, वो क्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ तुम उस क्वालिटी के तरफ का जो पाथ है वो पाथ को ही ब्लॉक कर दे रहे हो, सिर्फ खुद की इनसिक्योरिटी के कारण। क्योंकि माइंड तुमको डिल्यूजन करता है, माइंड तुमको बोलता है कि कर सकते या नहीं कर सकते। माइंड तुमको एक रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है जो रियलिटी दूसरों के लिए एग्जिस्ट करती है पर तुम्हारे लिए नहीं। वो रियलिटी एक ऐसी टाइमलाइन है जो सेम रियलिटी तुमको गिल्ट की तरफ लाती है। अगर तुम वही सेम रियलिटी को एक पाथ की तरह देखो तो सबसे बुरा प्रॉब्लम अगर कोई होता है, एक और टेंजेंट पे अगर हम जाके देखें तो सबसे बुरा अगर लाइफ में कोई गिल्ट है लोगों का तो वही रहता है कि मैं लोगों के हिसाब से जिया, मैं अपने हिसाब से नहीं जिया। कभी भी अगर तुम देखोगे कि एक वो नर्स की बुक है, डोंट रिमेम्बर कौन सी है, तो बहुत टाइम पहले पढ़ी थी मैंने। उसमें वो नर्स बोलती है कि डेथ बेड पे वो पैलिएटिव केयर में काम करती है। तो बोलती है कि डेथ बेड पे मैंने लोगों को देखा। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि जिससे कैंसर पेशेंट्स जो स्टेज 4 में होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द डेथ। तो उनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनके जो पेन है ये सबको सिर्फ कम करने के लिए, एलिविएट करने के लिए, उनको कम करने के लिए। तो उसके लिए वो ना डेथ बेड पे ये नहीं देखती कि लोग बोल रहे कि अरे यार मेरे को ड्राइंग नहीं आती थी, अरे यार मैंने पैसे नहीं कमा पाया, अरे यार मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया। मेन उसका कंसर्न था पूरे इसमें, मेन जो कंसर्न था उसका पूरे इसमें वो यही था कि लोग उसको बोलते थे मरने से पहले कि मैं यार ना लोगों का सुन के जिया, मैं लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जिया, मैंने खुद के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नहीं किया। मैंने खुद के एक्सपेक्टेशन को उतना बड़ा रखा ही नहीं कि मैंने खुद को परमिशन ही नहीं दी कुछ करने की। बाकी लोग परमिशन दे रहे हैं वो बात नहीं होती है, खुद को तुम जब तक खुद को कोई चीज करने की परमिशन नहीं दोगे, ठीक है, तब तक तुम अपनी लाइफ को फुल्ली जी नहीं सकते। तुम खुद को जो रेस्ट्रिक्शंस में बांध के रखते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि जाके अरे यही चीज कर लेता हूँ, वही चीज कर लेता हूँ, आउट ऑफ द वे जाके कोई स्पेसिफिक चीज करने की जरूरत नहीं है। पर खुद को एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकल के परमिशन देना जरूरी है। क्योंकि लाइफ जो रहती है ना ये बहुत स्केयर्स होती है, ये बहुत छोटी होती है। ठीक है। लाइफ के बाद की चीजें तो बहुत फिलोसॉफिकल हो गई, बट जो लाइफ होती है ना ये बहुत छोटी होती है। छोटी लाइफ होने के कारण ही ह्यूमंस के अंदर रिग्रेट होता है बहुत ज्यादा, हर चीज का गिल्ट होता है। पर ये गिल्ट जो है ना ये बाकी सारी चीजों को ओवरशैडो कर देता है। हम वो गिल्ट में उस रिग्रेट में ही जीते रहते मोस्ट ऑफ द टाइम। और हम खुद को परमिशन नहीं देते उस चीज से आउटग्रो करने की। हम खुद को परमिशन नहीं देते कि लोगों के एक्सपेक्टेशन से नहीं, खुद के एक्सपेक्टेशन से जीना। लोगों के कहने पे नहीं, खुद क्या करना चाहते हो इस चीज को जीना।
ये एक्सपेक्टेशन जब तक तुम खुद को नहीं दोगे, जब तक ये परमिशन तुम खुद को नहीं दोगे, तो तुम अपने आप का बेटर वर्जन देख कैसे सकते हो? तुम अपने आप को बोल कैसे सकते हैं कि आई एम इम्प्रूविंग, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द राइट पाथ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर बेटर और वर्स, इट डजेंट मैटर ना. बट लाइफ इज शॉर्ट. You have to give yourself permission. You have to give yourself to get out of this guilt and regret. Because guilt, regret, this cycle will keep on repeating. It's not about the small steps, even. Like sometimes I have read Atomic Habits, and even like small steps, a small habit to build self discipline or self dedication for some kind of stuff, it becomes so hard because you're like, if you have a perfectionist mind, okay, and if you are trying to be perfect in life, because nowadays it's like all social media and stuff, and everyone kind of wants to be perfect. So if you are trying to be perfect and you are trying to be so perfect in your mind, you're perfect in your whole sphere, you will try to impose yourself. You try to impose so many restrictions and everything on yourself, like, yes, I want to be a perfect person. But you can't be. Everyone can be 99%, but no one can be 100%, right? So थोड़ा सा खुद को लीनियंसी तो दे ही सकते हो ना. जो पर्सन, ऑब्वियसली बोली गई बात है कि जो पर्सन बाकी लोगों के साथ बहुत काइंड होता है, बाकी लोगों के साथ, वो खुद के साथ उतने ही सेल्फ हार्श एंड मोस्ट टॉक्सिक टू देमसेल्व्स. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माई सेल्फ. लाइक अगर मैं बाहर जितना लोगों के लिए नॉर्मल रहता हूँ, या बाहर जितना लोगों के लिए मैं थोड़ी मोड़ी काइंडनेस दिखाने की कोशिश करता हूँ, जितना भी होगा, आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ. और इवन दिस इज लाइक सेल्फ लोथिंग थिंग. सी, आई एम वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ. आई एम द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ मी. दैट शुड नॉट बी द केस, राइट? यू, यही तो गिल्ट होती है ना. यही गिल्ट से अगर तुम बाहर नहीं आ पाए, देन हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ? दैट्स नॉट द लाइफ यू वांट, राइट? तुम चाहते हो कि यू वांट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ द सबकॉन्शियस, यू वांट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ द ईगो. विल नॉट लेट यू अचीव दैट. यू हैव टू हैव दैट सेल्फ रिमेम्बरेंस दैट तुम्हारे पास ये ट्रेट्स है. तुम जेलस नहीं हो जो भी ट्रेट्स सामने वाले के पास है, जो भी सक्सेस उसके पास है. ये सारी चीजें तुम्हारे ग्रैस्प में है. अगर तुम खुद को रिमेम्बर करोगे कि यस, ये सारी चीजें मेरे पास भी है, मैं सबकॉन्शियस में ये चीज को रख सकता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा इस पे एफर्ट डालूंगा तो मैं ये सब चीजें अचीव कर सकता हूँ. इट्स ऑल विद इन मी एंड आई कैन हैव इट. द होल यूनिवर्स इज विद इन मी. इफ आई ट्राई माई बेस्ट, I can grasp anything out of even thin air. That's not the case with every aspect of life you try to do. Some aspects obviously will not go exactly into the place, but it was not like it was not meant to be. The time was not right. Everything has its specific time. You can have and achieve everything, but the time was not there, or that was not there. That also will create the guilt. If the time is not right, just consider another option. You'll be like, yeah, I'll not consider another option. But like how a compass was more important than a clock. If you are sailing, you don't want to know about the clock. You'll know, or you'll want to know more about the direction you are going in. Because if the time is not right, that eventually will become an excuse for you. But if you try it with another mindset, yeah, if time is not right, maybe the direction I'm going in is like something is wrong with it. Is it crooked? Is it not the right direction I'm going in? You have to change your direction. Maybe it will work, maybe it will not. Who knows? There are 4 directions. Correct? You try every way you can. If the time is not right, at least you can try the different directions. It's not like it's the end of the world. The ego pressurizes you. Okay, everything comes down, like it will create a new identity, like you can't achieve blah 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 and everything, and you'll be like, yeah, I can't. Then the subconscious will tell you you cannot manifest specific things. Then the time will come, the regret, guilt. But eventually it's you who are the one who can overcome these things, right? Even if you are depressed, even if you are
like, a person who has like social anxiety, a person who has like, yeah, I don't want to talk to something, a person who has like lost the will to love, a person who has like a strong apathy towards people, a person who can't feel emotions, a person who can't get angry, a person who is like, yeah, it's so much worse that I don't even want to cry right now. If you are that kind of person, you should know that you can at least try, because fearing it will not do any good, delaying it will not do any good. You can at least have a one small goal in the mind. If even if you can't achieve it, you can at least try to suppress your ego. You can at least try that, okay, this thing is within my grasp, not now, not like afterwards, not anytime soon, it's within my grasp. Okay, and had been within my grasp, not like it's now within my grasp. Like I'm learning a guitar and it's not like I have learned it already. I should keep in my mind like I had learned it, like I knew it already, that I can do this thing. With this mentality, it's not like very hard to get into this ego stuff. At least you can try to bypass the guilt with it. You can at least try to like, yeah, I can do it. It can be a little narcissistic, but more or less you can have a path in front of you. You can have like, yeah, I had these traits already, I can do it. And then it's like more, you try to suppress the guilt, you try to move over the guilt, you try to move over the obstacles you have kept in your mind, and eventually you can get into that atomic habits type of stuff. Like, okay, I have a small goal, I can build towards a small goal, I can build a good habit, I can build a good discipline. That discipline will be built, and if that discipline keeps on building, if that consistency keeps on building, it will eventually lead to good efforts, good things, and you'll eventually see the results. Even if the results are not in your favor, you will see the results. And as it is said in Bhagavad Gita कि फल की चिंता मत करो करके, so why you are thinking about something that has not even happened yet? You can think like, yeah, I have this, blah blah blah, you can manifest it that you have won already, but you don't have to keep thinking about it. Now you can just keep thinking about your progress. Life is so good if you keep thinking and keep visualizing in your mind about the one person who has won. Then if you have failed, you'll eventually fall back into regret. So you should just think like, oh yeah, I have completed this task, or I will complete this task, or I have already completed this task in my mind. That is just manifesting, but not, becoming more egoistic about it. If you become more egoistic about it, like I will win, then I will get praise from everyone, or I will become successful and I will become that kind of rich person, then everyone will see me in a different light or something. That, if that scenario doesn't play out, that is just a fake timeline, that is just a fake lie that you are creating about someone. Same goes with this. If you're not trying to follow a special path, if you're not trying to follow like a more realist version, but a more delusional version also, it has to have a balance. Even in love, a delusion and reality both should have a balance. Even in like, success or paths in life, you must keep balance in both places. You should know like, okay, I have done this specific thing and I will do this specific thing. Any goal in your life, like if you want to like complete any exams, you want to complete any, syllabus, you complete any degree or anything else, doesn't matter. Any sports, like, okay, I want to learn baseball. I know you'll not directly go into the MLB, like Major League Baseball leagues and everything, nothing else. You can't just directly go there, right? Even in football and all, like you'll directly not be like, oh, I'm playing and I'll be scouted by Barcelona or something. Nothing. It doesn't work like this. You can manifest it. You can think about it at least in your brain. That way you can just you can just remove the guilt from your mind. Just remove the guilt from your mind. You can be like, yes, this is what I want to achieve, but not what I really want to achieve. I want me walking towards this specific thing, but I don't want to think about what will happen if this thing happens. I don't want to imagine a fake scenario in my mind. I have already won, but I don't want to think about it.
that will keep you on a right path without the ego, without the guilt, and without the regret, even if you fail. And even if you fail, if you don't have that specific mindset of ego and everything, the next day you'll just get up, work towards it. You have failed the goal, but doesn't mean like you have to stop, right? You can just go towards it. You are in the ditch. You are clawing. Try to claw to the top. It's very hard. Everyone has it very hard. But you can try to claw. One step at a time. First the mindset, then you try to claw up, then you try to do some things very slowly. Then you can put a major goal in front of you. If you fail, at least you'll have this fail-safe mechanism, like you are, okay, I'm above it. I can just move towards the specific stuff more. I can move towards the goal more. And if the time is not right, I can change direction. If the direction is not right, I can change the direction again. I can change the goal again. I don't have to put the goal back, put the goal forward. I can just change everything. It's my life. I don't want to have regrets. I want to have expectation from me, not other people should have expectation from me. I want to have expectation from me, and I want to be true to myself. I want to true to my ego. Okay, I want to be true to my ego. That way, I can just put the goal whenever, wherever, whenever, whichever direction it wants to be. It doesn't matter to anyone. That way I can just move forward. I can just move forward. Nothing matters in life if you don't move forward. Change doesn't come if I'm just sitting right here. Change will come if my mind wants to move. And my mind doesn't want to move. It's the most lazy thing in the world. It will tell you don't have to do anything. But that will not create the change. Only you can create the change. And it starts from here. It will start from here. You have to take control of the ego. Then only you can do anything or want to put anything. Then that thing can be successful. Only then. And that's how you'll achieve it.